सबका लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, ये शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। संगीन पे धर कर माला, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान गंवा दी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवान। I'm Santosh Kumar. I'm the director of a senior center here in Chicago. We are so excited, and my seniors are so excited, having the big victory of Mr. Narendra Modi as a prime minister of a BJP party. And we are thinking a new era is coming. All the seniors are thinking that old era will return with our value system, which our culture, where our heritage, where our Vedas has given to us, like a Vishwakutum. Now we will work for all the religions, all the sectors, all the factors, and all the caste and creed without any discrimination. And we want and we wish our India corruption-free, clean, and developing in all sectors, in all fields. And we have a faith that Mr. Narendra Modi, you will do this thing.
and you have a power, you have a charisma, and you have a blessing of all the gods. So we wish you a great success as a Prime Minister for our country and for our neighboring countries. And we, Jai Hind and Jai Bharat Ma. I'm Pramod Kumar. I'm very happy Narendra Modi is the 15th Prime Minister of India. India deserves more success and progress. And Mr. Modi is a guy who has done a great job in Gujarat. And we hope India will progress same way under Mr. Modi. And we wish him all the success and everything should improve under him. Thank you. My name is Beena Patel. Congratulations to all Hindustanis all over the world for the victory of Shri Narendra Modi. He is very encouraging, amazing, a great leader who will look after all Indians, not only in India, but all over the world. All Gujaratis and all Bhartiyas are so happy that he will bring a lot of changes, positive changes to India. India will be, in this century, very well known all over the world under the leadership of Shri Narendra Modi. Congratulations. Jai Hind. Hello, my name is Naren Patel. I'm a board member of Metropolitan Family Services. And whole our board and everybody, the members, are so happy and proud for our Narendra Modi ji, Prime Minister of India. Now, all our board and our community, including MFS, is so excited to see that Narendra Modi ji is there now as a PM. So we are hoping for a lot better India. We were waiting for somebody like you. And the day you was running for our election, I was always thinking, if Narendra Modi ji is going to win, he is going to be another Sardar Patel. And we wanted for India, nobody but Sardar Patel to run the show. And now you are there, you are my Sardar Patel. All the best, good luck, congratulations. I am Nikunj Bakshi. I am in the MFS board for last 10 years. Congratulations to Narendra Bhai Damodarji Modi for being a Prime Minister of India. I am very proud that you and your party made the wonderful and very marvelous landslide victory over the other party. Again, I congratulate, and I have seen that you have put Gujarat on top of the India, and you would put our country along with the other country in a top and developing country, from underdeveloped to developing country. I congratulate, and what you are going to do, I would like to see as a proud Gujarati. Congratulations again. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम राकेश अस्थाना है और मैं मेट्रोपॉलिटन एशियन फैमिली सर्विसेज से पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ हूं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठता हूं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के लिए मैं कुछ 2 शब्द कह रहा हूं। नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने गुजरात में जो रोल मॉडल स्टेट का बनाया और जिस तरह से इस प्रदेश को आगे बढ़ाया, वो सराहनीय है। और हम कोशिश करेंगे और देखते रहेंगे मोदी साहब को कि वो आगे जाकर क्या इस देश के लिए कर सकते हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत आशाएं हैं, बहुत उम्मीदें हैं और बहुत की एक्सपेक्टेशंस हैं, मगर इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी कोई जादू की छड़ी लेकर नहीं आ रहे हैं इंडिया में। वो कुछ कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, वो कुछ बदलाव लेकर आ रहे हैं और हमें उनका साथ देना है। एक बदलाव देश में आया है और इस बदलाव को हमें आगे बढ़ाना है, और जब तक हम उनका साथ नहीं देंगे, चाहे वो भारत में हो, चाहे हम प्रवासी भारतीय अमेरिका में हों या कि देश के दुनिया के किसी कोने में हों, हमें उनका साथ देना है और हमें भारत को आगे बढ़ाना है। और इस तरह से अपने देश को आगे बढ़ता हुआ देखकर मैं जानता हूं कि हम सबको बहुत खुशी होगी। तो नरेंद्र दामोदर भाई मोदी जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं MAFS की तरफ से, अमेरिका में प्रवासी भारतीयों की तरफ से और हम सब की तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। Hello, my name is Sumitra Patel. ઓકે, અમે નરેન્દ્ર મોદી પ્રેસિડેન્ટ થયા છે એ બદલ અમે ખૂબ જ ખુશી છીએ અને હું એમને 2011માં મળી હતી। मैं प्रमिला मेहता, मेट्रोपॉलिटन एशियन फैमिली सर्विस शिकागो, और हमारे सीनियर्स इतने खुश हुए हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और दावतें दे रहे हैं। एक
नए फ्यूचर को देख रहे हैं कि वो आने वाला समय बहुत सुहावना होगा, और यही हम आप सबसे उम्मीद करते हैं और यही आपके लिए कामना करते हैं। I would like to congratulate Mr. Modi for his victory. He has brought lot of changes in Gujarat, and hopefully now he will bring more changes all over India. When I went to India, I found Gujarat a very, very different place, and hopefully we'll see that all over India. We're looking forward to meet him over here in USA very soon. Thank you. Hi, my name is Firdaus Jaffrey. I'm with Metropolitan for last 10-15 years. It seems like forever. It's a great organization. That's the reason I belong to them. And they belong to me, actually, I should say. I'm a good friend of Santosh and her husband. And we've been friends also for longer than that. Metropolitan is actually for all the seniors who need our help. We are here for them. And we are trying to organize educational as well as recreational programs. We also have health care available to them. The more I say for Metropolitan is less actually in reality, because they do lot of things for Metropolitan. I'm glad that Narendra Modi won the race in elections in India, and hopefully he will not discriminate amongst people, and he'll create a lot of jobs for the unemployed people in India, and good luck to him. चंदन है इस देश की माटी, बच्चा बच्चा राम है, जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है. કિરીટ શાહ. ધન્યવાદ. હું મેટ્રો સિનિયર સિટીઝનનો સભ્ય છું, અને આજે મને આપણા ભારતીય નવા વડાપ્રધાનની ઇન્ટ્રોડક્શન કે થોડાક એમના વિશે કહેવા માટે મને બોલાવવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. તે માટે મને બહુ જ ગૌરવ છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાથે મેં 1972થી કે 1991 સુધીમાં વિવિધ પ્રોજેક્ટમાં વિવિધ રૂપે કામ કરેલું છે. એમાં સર્જિકલ કેમ્પોમાં, મોરબી ફ્લડ રાહતમાં અને ઇમરજન્સી દરમિયાન અંડરગ્રાઉન્ડ કામ કરવાની મને અમૂલ્ય તક મળી છે, અને મેં એમને ઘણા જ ઝીણવટથી એમનો કાર્ય પદ્ધતિ, એમની કેપેસિટી એનો મેં અનુભવ કર્યો છે. હું અત્યારે આત્મવિશ્વાસથી કહી શકું એમ છું કે આવનાર દિવસો ભારત માટે શ્રેષ્ઠ હશે, અને એ ભારતને શ્રેષ્ઠ કક્ષાએ મૂકશે એવી મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. એવો મને હું કૌશિક મોદી મેટ્રો સિનિયર એશિયન ફેમિલીમાં મેમ્બર છું, અને મને ઘણો આનંદ થાય છે. અને આ વાતમાં મને એમ જણાવું છું કે નરેન્દ્રભાઈ મોદી એ ભારતના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તરીકે આવ્યા છે, એ બદલ મને ઘણો આનંદ અને હૃદયપૂર્વક મારા અંતરથી એમને આનંદ આપું છું, એમને નિષ્ઠા આપું છું. અને આને કારણે આપણા દેશનું ઘણું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય થશે. અને આ અમારા ખાસ ભાજપના સંઘના આગેવાન હતા, અને અમે બધા અમને કેનવાસિંગમાં પહેલાં અમદાવાદમાં બહુ કામ કર્યું છે. આજે પણ હું એમના વતી ઘણો આનંદ પામું છું, અને આવા જો મિનિસ્ટરો ઇન્ડિયામાં થાય અને બને તો દેશનું ભાવિ ઘણું ઉજળું થાય. મારું નામ બાબુભાઈ મોદી. હું ગુજરાતમાં અમદાવાદ શહેરમાંથી આવું છું. હું નરેન્દ્ર મોદી વિશે ઘણું જાણું છું. નરેન્દ્ર મોદી એ ગુજરાતના પ્રધાન હતા, અને તે ઉપર એમણે ઇન્ડિયાના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બન્યા છે. એ નાનપણથી હું એમને સારી રીતે હું ઓળખું છું. એમનામાં એટલી તાકાત છે કે એમને પણ સપનો ખ્યાલ નહોતો કે હું ચાની કિટલીમાંથી, ચાના ધંધામાંથી કે હું મોટો પ્રધાન થઈશ, એવો કોઈને સપને ખ્યાલ નહોતો. હું ચોક્કસ આશા રાખું છું કે ભારતનું મહાન પ્રગતિ કરશે, અને જે આ પ્રગતિ છે એનાથી પણ વધુ પ્રગતિ કરશે, ये हूँ आशा रखूँ छूँ. मेरा नाम शिरीन वीरानी है. मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ,
और मेट्रोपॉलिटन में क्लाइंट हूँ। नरेंद्र भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप भारत के नए प्रधानमंत्री बने। हम दुआ करते हैं कि भारत और पाकिस्तान हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़े और अमन और शांति दोनों देशों में कायम रहे, ऐसी उम्मीद करती हूँ। अमेरिका शिकागो से दोनों देशों के लिए, एशिया खंड के लिए डेवलपमेंट चाहते हैं। यही उम्मीद करते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। मेरा नाम साबिरा सैयद है, मैं मेट्रो की सीनियर हूँ। नरेंद्र भाई, बहुत मुबारक हो आपको कि आप हमारे हिंदुस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपकी हर मुश्किलें आसान करे और भारत और पाकिस्तान में अमन चैन रहे और कामयाबी हासिल करते रहो। मेरा नाम प्रभा है, मैं अमेरिका शिकागो थी मेट्रोपॉलिटन सेंटर छूँ। हम तो तुमने बहुत वर्ष से जानता है, तुम अच्छे काम करने वाला हो। गुजरात में तुमको बहुत अच्छा काम किया। अभी तो तुम नरेंद्र मोदी, तुम तो वड़ा प्रधान बन गया। सब लोग के बहुत खुशी है, सब लोग के बहुत आशा है कि तुम बहुत अच्छे काम करने वाला हो। हम तुम्हारी खूब दुआ है, सब लोग की तुम्हारे पर बहुत दुआ है। सब लोग इच्छा रखता है कि तुम अच्छे काम करने वाला हो। थैंक यू नरेंद्र भाई। Hello, my name is Himali Patel Barucha. I am working at the Metropolitan Asian Family Services. We serve seniors all over the Chicagoland. We are very proud and we are very honored that CM Modi has become a Prime Minister of India. The day તમે જે દિવસે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બન્યા એ દિવસે મેં બધા મારા કલીગ્સ અને ફ્રેન્ડ્સને I was so very happy. મેં કીધું કે આ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે તે શકલ બદલશે ઇન્ડિયાની next 10 yearsમાં. So best of luck to you for peace and prosperity throughout India and the world. જય સ્વામિનારાયણ. અમે મેટ્રો શિકાગોથી આવ્યા છીએ અને અમારા ગુજરાતમાં નરેન્દ્ર મોદીએ બહુ સરસ કામ કર્યું છે. इतना बड़ा बड़ा रास्ता बना दिया, रोड बना दिया, सब उद्योग भी बहुत बढ़ाया। नैनो कार क्या उद्योग है वहाँ, उसने बहुत अच्छा काम किया और केंद्र में भी अच्छा काम करेगा। वड़ा प्रधान बन के वो मोदी महल में चले गए रहने कल, और अच्छा देश के लिए अच्छा काम करेगा। बस मेरी शुभेच्छा है।